about the having 31 years of experience and the topic to be taught. So today's topic is augmented reality, AR and virtual reality, VR, applications in manufacturing. So first of all, I would like to welcome our guest Dr. G.K. Awari sir in our institute, Dr. Padmasri Dr. V.B. Kolte College of Engineering. Sir, first of all, I would like to welcome you. So give a huge round of applause for G.K. Awari sir. Now I would like to request the HOD of Mechanical Department, S.S. Patil sir, to felicitate our guest and the speakers by offering him shawls, slipper and bouquet. Welcome all of you to the last but one day of the faculty development program, which is basically sponsored by the AICT Atal Academy. And let me congratulate the Dr. V.B. Kolte College of Engineering, Malkapur, for taking the initiative to organize the such kind of faculty development program for the benefit of the technical fraternity in the region. And I know that this is first time that such kind of sponsored event is being organized at Dr. V.B. Kolte College of Engineering, Malkapur. On the first day, the inaugural day, I have discussed about the smart manufacturing, how the smart manufacturing will be, what is the production line of today's production line, as well as the future production line. And today the topic which is being given to me is augmented reality, virtual reality and 3D printing applications in the manufacturing. I think Abhijit Raut sir, he had been to this institute who work in the area of the 3D printing. Okay, Vishwajit Ambade, also my research scholar, who has pursued the PhD under my supervision in Gondwana University. He had been to this place. He is also working in the field of 3D printing, and three more PhD scholars are working under my guidance under the Gondwana University for the doctoral research work, and particularly in the area of the 3D printing. So today we will see augmented reality, virtual reality and the 3D printing applications in the manufacturing. So what is augmented reality and the virtual reality? Exploring the future of immersive technology, that is nothing but the AR VR. Okay, so this place may be small, but if you go to the Amravati, if you go to the Nagpur, or if you go to the Mumbai, or in the SL world also, you might have seen the childrens, those who are experiencing with the augmented reality or the virtual reality. Okay, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा तो जो चिल्ड्रंस गेम खेलते हैं, ओके, अपने आँखों के सामने एक VR का कैमरा आता है, वो VR का कैमरा लगाते हैं and they feel that they have entered into that field and 3D picture is being created in front of them. वो कहाँ पे है, कौन से विश्व में है, वो सब भूल जाते हैं, and then they start playing that kind of game. So this is for a particularly for a game purpose, but there are many more applications of augmented reality and the virtual reality. And the colleges also, engineering colleges also, they are coming up with the basically the laboratory of the augmented reality and the virtual reality. So at the end of my presentation, I will show you one of the lab, AR VR lab, which is developed at the GH Raisoni College of Engineering, Nagpur. They have the AR VR lab, and one of my research college, he is in charge of that laboratory. And what we are looking for means, and whenever you submit any kind of proposal under the research promotion scheme, RPS scheme of the AICT, wherein 50 lakhs of rupees grant can be given to the institute, to the principal investigator
Similarly, there is a scheme like a MODROP is there, modernization of the laboratory and removal of the absolence. So MODROP scheme is there, wherein 50 lakhs of rupees can be given as a part of the grant by the AICT. Under such situation, what we look for the proposals basically which are with the tallying or which are complying with the latest trends in that particular field. So computer science and engineering, electronics engineering, mechanical engineering, augmented reality and virtual reality is a part of the new techniques which is being used. Okay, जैसे कि हमारे अगर इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसको यूज करना है तो आपने देखा होगा कि सिमुलेशन पार्ट। ओके, पहले अगर मान लीजिए कि ये कंपोनेंट इस तरह का कंपोनेंट बनाना है, तो इस तरह का कंपोनेंट अगर बनाना है हमें, तो पहले पायलट प्रोडक्शन करना पड़ता था। इसका डिजाइन तैयार हो गया, इसके मैन्युफैक्चरिंग का जो है कौन करने वाला है, क्या करने वाला है, सब कुछ रेडी हो गया। ये सब कुछ रेडी होने के बाद में पायलट प्रोडक्शन करेंगे। पायलट प्रोडक्शन करेंगे मतलब एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बना के इसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड रूम में लेके जाके करेंगे, चाहे वो शॉप फ्लोर में करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट है ये डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर उसके डायमेंशंस मीट करता है तो आगे प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ इसके ऊपर कुछ ना कुछ समय लगा, टाइम लगा। ये प्रोडक्ट जो तैयार हुआ इसके लिए कुछ ना कुछ जो है कॉस्ट लगी। बाद में ये प्रोडक्ट को पायलट प्रोजेक्ट को फेंक देंगे और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए कैसा है कि दिस टाइम कैन बी सेव्ड when we perform the simulations under the virtual reality or the augmented reality। मतलब हम लोग जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन करने के जगह, जिसको मशीन का हम बोलते हैं कि ड्राई रन मतलब जो है वो मशीन चल तो नहीं रही है, लेकिन मशीन कैसे चल रही है, कैसा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो हमें दिखाई पड़ता है, वो हम देख सकते हैं। और प्रोडक्ट के क्या डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन आएंगे वो भी हम पता कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन का अगर प्रोग्रामिंग करना है तो उसको मशीन को रुका के प्रोग्रामिंग नहीं किया जाता है। मशीन तो कंटिन्यूअसली चलती है 24 आवर्स अ डे, 365 डेज इन अ ईयर। कोई भी सीएनसी मशीन आज अगर देखा जाएगा तो 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के नीचे मशीन नहीं आती है। तो 6 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द इंडस्ट्री। दे वांट दैट द मशीन इज यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स अ डे एंड 365 डेज इन अ ईयर विदाउट एनी ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन, क्योंकि मशीन का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए टू मेक इट मशीन द कॉस्ट इफेक्टिव। So for this purpose we can go and take our simulation in an offline manner, perform the activities, try to see that whether the correct product is manufactured or not, and then we will go for the actual manufacturing. So the augmented reality or the virtual reality, it is helpful for that. AR is a technology that overlays digital content such as images, sounds or data onto the real world environment in the real time. For example, using your iPhone to see furniture placed in your room before buying it, like IKEA Place app. Okay, अभी पहले अगर जाते थे, या मुझे भी जब टीवी खरीदना था कोरोना के समय में, रिनोवेशन किया तो घर का रिनोवेशन किया तो टीवी लगाने के लिए स्मार्ट टीवी खरीदना था। अब स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए, है ना, अपने घर में जगह कितनी है वो टेप से मेजर किया और टेप से मेजर करके शॉप में गए। एमआई का टीवी खरीदना चाहते थे तो एमआई की शॉप में गए जो कि स्मार्ट टीवी बनाता है, और मेजरमेंट लेके, टीवी का मेजरमेंट लेके देखा कि ये फिट होता है कि नहीं होता है। अब कैसा दिखता है घर में टीवी लगाने के बाद में ये तो नहीं देखा था। But in case of this augmented reality, virtual reality, there are certain apps. If you go to any showroom of TV, okay, उसके टीवी के डायमेंशन देख के आपके घर के डायमेंशंस में फिट होता है कि नहीं है, आपके घर के अंदर में टीवी मतलब अच्छा दिखता है कि नहीं है,
whether it suits the color, TV color suits the color which has been given to your wall, everything is being possible with the help of the augmented reality, virtual reality. Means no need to procure the TV लेके जाएंगे, घर में लेके जाएंगे और बोलेंगे कि टीवी यहाँ फिट नहीं हो रहा है भैया, दूसरा टीवी दे दो. So not necessary. So this kind of before using your phone to see furniture placed in your room before buying it, so that is possible with the AR. Virtual reality is a fully immersive technology that replaces the real world with a completely virtual environment experienced through a VR headset. Example, playing a VR game using a headset like a Oculus set. ठीक है? So in virtual game you will forget about the real environment. आपके आजू बाजू में कौन है, क्या है. मतलब जैसे कि आप लोग एक आधे मेले में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, है ना, तो वहां पे आपको दिखता है कि एक एरोप्लेन है. ओके, जो लोग हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते हैं, 5,000 10,000 का टिकट खरीद के, उनके लिए 50 रुपए के टिकट में वो हवाई जहाज का एक्सपीरियंस देता है. ठीक है, मतलब आप हवाई जहाज में 50 रुपए की टिकट निकाल के बैठ गए, आर्टिफिशियल हवाई जहाज बनाए, एरोप्लेन बनाए, आप बैठ को वो वाइब्रेशन उस तरह का क्रिएट करता है एंड यू विल फील लाइक दैट यू आर बेसिकली फ्लाइंग इन दी एरोप्लेन. सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ द वर्चुअल रियलिटी, दैट यू विल फॉरगेट अबाउट द आउटसाइड एनवायरनमेंट. या फिर आप प्लैनेटोरियम में जाते हैं, है ना, मुंबई में जाएंगे, नेहरू प्लैनेटोरियम जाएंगे, तो प्लैनेटोरियम के अंदर में आप अगर बैठेंगे तो 10 मिनट 5 मिनट में आपका वो एनवायरनमेंट इस तरह का तैयार होगा कि बाहर का एनवायरनमेंट दिन है, डे टाइम है, लेकिन यू विल फॉरगेट दैट एंड यू विल अज्यूम दैट नाउ देयर इज अ नाइट. ओके, ऊपर मेरे छत है, छत के अंदर में ये दिखाया जा रहा है. So with the help of the virtual reality, that kind of environment can be simulated, which will take you away from your real environment. So example of virtual reality is playing a VR game using a headset like Oculus set. Okay, how AR works? It uses the camera, sensors and processor. AR systems rely on the device camera to see the real world, sensors like a GPS, accelerometer to understand the environment, and processor to analyze and display digital content in the real time, overlays digital information on real world view. AR adds virtual objects, text or graphics on top of what you see in the real world through your screen or AR glasses, making it interactive and informative. ठीक है, तो you will गेट इन टू दैट एनवायरमेंट. अभी ये जो अगर हम सोचेंगे तो ये जो वर्षन आया है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का, ये पुराना जो था, मतलब ओल्डन डिकेड जो टेक्नोलॉजी थी उसी का एक एडवांस वर्जन आप बोल सकते थे. ठीक है ना. तो जैसे कि आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी होंगी, दीवार पिक्चर देखी होंगी, और दीवार पिक्चर देखते वक्त और थिएटर में अगर मान लीजिए 100 लोग है वहां पे, ठीक है, 100 लोगों में से आपने देखा होगा कुछ लोगों के आंख में जब जो शशि कपूर जो डायलॉग बोलता है उससे आंखों में आंसू आ जाता है. ठीक है, क्या आंसू आता है? वो अमिताभ बोलता है मेरे पास ये है, वो है, फलाना है, वो है. शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है. ठीक है, ये एक डायलॉग जो है अंदर बैठे हुए लोगों को रुला के जाता है. ठीक है, कितने सारे लोगों को रुला के गया था. ऐसी बहुत सारी मूवीज आई. देखिए, माँ के ऊपर जो मूवीज बनती है उसमें लेडीज जो अंदर बैठी है वो हमेशा रोती है. ठीक है, माँ के ऊपर जितनी मूवीज बनी, अंदर बैठा हुआ एनवायरनमेंट इस तरह का तैयार होता है. 2.5 घंटे 3 घंटे में आप सोचते हैं कि शशि कपूर की जगह, अमिताभ बच्चन की जगह मैं हूं यहाँ पे. ओके, एंड आई एम प्रोसेसिंग द डायलॉग, और वो उस तरह का फीलिंग आपके अंदर में क्रिएट किया जाता है. बाहर निकलते हैं आंसू पोंछते वक्त और बोलते हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है. इसका रीजन क्या है कि मूवी विल टेक यू टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसमें आप सोचते हैं कि मैं हूं ये, ऋतिक रोशन मैं हूं, करीना कपूर मैं हूं. ठीक है, कोई और नहीं है. एंड एवरीबडी
feels like a star, everyone feels like a film actress, everyone feels like a film actor, superstar जैसे हम सोचने लगते हैं 3 घंटे का पिक्चर देख के बाहर जब आते हैं, उसी तरह का एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है. So under this virtual environment here, for a moment of second or for a moment of time, if you are playing a game for half an hour, you will forget about the real world. You will go into the entirely created world, animated world, and completely 3D dimensions, complete 3D movie, it will be there in front of you and you will be playing with the game. So this is what VR works. Camera is there, captures the real world environment. Processing unit analyzes data and overlays digital content. Display shows the combined real plus virtual view. Example, Pokemon Go, IKEA Place app. These are all the examples of the VR app. Okay. पिक्चर की मूवी में 3 घंटे में तो आप बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो मूवी बढ़ते बढ़ते जाती है. इसमें अगर कोई आपको रोकेगा नहीं या फिर आपका गेम स्टॉप नहीं होगा, तो आप जो है वो उसी वर्ल्ड में वो रहेंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में रहेंगे. जैसे कि आज की जनरेशन जो है, जो मोबाइल में गेम्स मिल रहे हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं. उनको लगता है कि मोबाइल में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गेम में जो दिखाया जा रहा है वो सही है, एंड दे ट्राई टू इमिटेट, दे ट्राई टू प्ले लाइक दैट इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन. सो दिस इज द वर्चुअल वर्ल्ड VR. How VR work, it uses headset and motion tracking. VR relies on a headset to block out the real world and motion sensors to detect your movements and adjust the virtual view accordingly. Simulates real or imaginary environment. So VR creates a fully digital 3D environment that can be based on real places or entirely fictional worlds, allowing users to explore and interact as if they are really there. So PlayStation of VR is there, and there are many more apps basically which are working under the VR. And this is the AR VR industry which is grooming up in the entire world, in the entire India also, wherein a lot of jobs can be offered, opportunities can be offered in the AR VR. Then a headset for visual and audio immersion, sensors for motion and position tracking, controllers are there for user input. Okay, headset displays the virtual environment and plays 3D audio. Sensors track head and body movement for real-time responsiveness, and controller let the user interact with objects in the virtual world. So this is what the AR VR working is there. So augmented reality and the virtual reality overlays computer generated 3D content on the real world. User is able to interact with the real world and the virtual world. User can clearly distinguish between both the world. It is achieved by smartphones, tablets or AR wearable. Okay, so this is with the help of the smartphones, augmented reality can be seen, can be realized. In the virtual world, visually immerse the user with simulated objects and environment, completely shut down the real world and make user think that they are really in the virtual world. User find it hard to differentiate between virtual and real world. It is achieved by the VR headset. So this is the differences and the similarities between the augmented reality and the virtual reality. So applications of the AR, okay, applications of the AR is education and the training. Okay, कल ही किसने कहाँ गया था मैं, कल कहीं तो भी गया था मैं, उसने बोला कि ये जो है ये ट्रेंड है. ओके, मतलब जो है वो ट्रेंड है. मतलब अगर किसी के घर में गए हम लोग, वहाँ पे डॉग है, तो डॉग, हमें डर लगता है कि डॉग बाइट करेगा हमें, तो घर का मालिक बोलता है कि डॉग इज ट्रेंड. जब हम काम करते हैं किसी कंपनी में, तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं,
तो उस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। जिस तरह से ट्रेन करते हैं उसी तरह से वो परफॉर्म करता है। जो भी न्यूरल नेटवर्क डेवलप करेंगे, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट जो डेवलप करेंगे, उसको वो परफॉर्म करता है। उसी तरह से ये जो है, ये ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है वर्चुअल रियलिटी इन द हेल्थ केयर, द सर्जरी गाइडेंस, इन रिटेल शॉप्स ऑल्सो, वर्चुअल ट्राई ऑन, ओके, एंड द नेविगेशन। ठीक है, सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द AR VR, which means that okay, one shirt is there, okay, अब उसको शर्ट को निकाल के ड्रेसिंग रूम में जाके देख के ये कलर मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा, या ड्रेस है, देखने की जरूरत है क्या? नहीं है। आपका टैब लीजिए, टैब में वो शर्ट को डाउनलोड कीजिए, है ना, आपका फोटो उसमें ऑलरेडी मोबाइल में जो है वो टैब में डालिए, आपके ऊपर वो शर्ट या ड्रेस कैसे लगता है, हाउ यू लुक्स लाइक आफ्टर वेयरिंग दैट शर्ट और द ड्रेस, दैट यू कैन सी इन द वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ड्रेसिंग रूम में जाके, चेंज रूम में जाके कपड़ा चेंज करके देखने की जरूरत होती है क्या, वेदर इट सूट्स और यू? नो, ओके, नो नीड टू गो डू दैट. So these are the in the retail shops navigation system. This kind of applications of the AR are there. Applications of the VR. Okay, gaming is there. Application of the VR. Virtual reality games are there, which are being available at many of the shopping mall and at many various places. If you go to the SL World and various kind of shopping malls, big restaurant, you will find this. Then education, virtual classrooms are there, and this is what the left hand side picture you can see, the basically driving simulator. This is an example of the virtual reality, है ना। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब आप भी जब छोटे थे तो एक छोटी सी बाइक लगी रहती है मेले में, वो बाइक के ऊपर आपको बिठा देते हैं, सामने स्क्रीन लगती है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद मतलब 2-3 मिनट में आपको ऐसा लगता है, वो मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और मैं ही गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, यहां से निकाल रहा हूँ, वहां से निकाल रहा हूँ, लाइक दैट. सो दे गेट इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ द वर्चुअल reality. So these kind of things now the government has decided to use for the driving simulator to be used for giving the licenses of 2-wheeler and 4-wheeler. ठीक है, हमारे पास में आरटीओ की संख्या कम है ना, हर रोज लोग लाइसेंस लेने वाले 4-wheeler 2-wheeler के बहुत ज्यादा है, पेंडिंग होते हैं एप्लीकेशन. 18 उम्र की होने के बाद में हर कोई चाहता है कि लाइसेंस मिले. तो वर्चुअल सिमुलेटर्स इज बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि आरटीओ में लगे हैं. तो आपको लाइसेंस देना है कि नहीं देना है, ड्राइविंग टेस्ट आपको 8 का जो आंकड़ा निकाल के देना था, अब ये प्रैक्टिस धीरे धीरे खत्म होते जाएंगी और आप बैठेंगे आरटीओ ऑफिस के ड्राइविंग सिमुलेटर पे. ड्राइविंग सिमुलेटर आपके टेस्ट का रिपोर्ट देगा. ओके, आप अगर ड्राइविंग सिमुलेटर टेस्ट में पास है तो पास है, फेल है तो दूसरी बार आके रिपीट करना है. ओके, सामने आते जाएंगे आपको कि एक ट्रैफिक सिग्नल, येलो लाइट, रेड लाइट, फलाना फलाना, स्पीड ब्रेकर का सिग्नल, आपको फटाफट वो ड्राइविंग सिमुलेटर में बताना है कि ये है कि नहीं है, ये मतलब कौन सा सिग्नल है. और आप ड्राइविंग सिमुलेटर पे बैठ के आप गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड लिमिट वहां पे दी गई है, मान लीजिए समृद्धि महामार्ग पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट दी है, तो आप जो गाड़ी भगा रहे हैं एक्चुअली नहीं भगा रहे, ड्राइविंग सिमुलेटर के साथ भगा रहे हैं, वो 120 के नीचे से चला रहे हैं कि 120 के ऊपर चला रहे हैं, ये सब ऑब्जर्वेंस आपको करना है. And that is being possible with the help of this kind of driving simulator. This is being already purchased by the government of Maharashtra at few of the RTO places. It is being available. मुझे ऐसा लगता है कि आपके मलकापुर में RTO ऑफिस नहीं है, आपका हेडक्वार्टर बुल्डाना है, तो बुल्डाना में RTO ऑफिस है, खामगांव में भी खुला है ऐसा मुझे लगता है. मलकापुर में है कि नहीं है पता नहीं है, है ना. हाँ, खामगांव में है. ओके, मलकापुर में नहीं है, मलकापुर तालुका है लेकिन यहाँ पे नहीं है, आपको खामगांव जाना पड़ता है या फिर बुल्डाना जाना पड़ता है.
ठीक है. सो इन द आर्किटेक्चर, okay, virtual walkthroughs, therapy, okay, all these cases, this kind of virtual reality is being used. Yeah. डॉक्टर के पास गए, एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करना है, तो अब वो आपको प्लास्टिक सर्जरी का सजेस्ट करता है. प्लास्टिक सर्जरी करके थोड़ी बताएंगे आपको कि आप ऐसा दिखोगे करके, है ना. आपका कान जो है इस तरह से टूटा हुआ है, हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करेंगे तो कैसे दिखेंगे. आप भी बोलोगे डॉक्टर साहब मैं प्लास्टिक सर्जरी कर रहा हूँ, इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो हाउ आई विल लुक लाइक. तो डॉक्टर्स आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में, वीआर में जाके आपको दिखाएंगे कि हाउ यू विल लुक लाइक फॉर अ थेरेपी, फॉर अ ट्रीटमेंट एंड फॉर अ आर्किटेक्चर ऑल्सो. वर्चुअल वॉकथ्रू मतलब इट विल बी यूटिलाइज और इट विल बी यूज. मतलब आप अगर किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में घर लेना चाहते, फ्लैट लेना चाहते, तो वो आपको वर्चुअल रियलिटी में ही बताएगा कि आपका घर कैसे दिखेगा, आपका फ्लैट कैसा दिखेगा बनने के बाद में. अभी तो बना ही नहीं है वहां पे, ठीक है, बना के थोड़ी दिखाएंगे, वो पहले ही दिखाएंगे आपको विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल रियलिटी. सो दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द वर्चुअल रियलिटी. ओके, फ्यूचर ट्रेंड्स, मिक्स रियलिटी, holographic displays, improved AI integration, and 5G powered AR and VR experiences. So, with our first topic of augmented reality and virtual reality, we conclude here that the AR and VR are transforming industries. Okay, in many of the industries, for we can say the dry run or for creating a simulating environment, this kind of AR VR technology is being used. Both technologies have unique strength. Continued innovation will lead to the more immersive experiences. So this is all about the AR and VR. In future, the industries will be extensively using this kind of AR VR technology, and maybe the curriculum of the autonomous colleges, okay, they need to incorporate the subjects of the AR VR depending upon the basically the culture of the institute, and depending upon the curriculum of the institute, what do they offer. The GH Raisoni College of Engineering, in their autonomous curriculum, they have adopted the subjects, advanced subjects like augmented reality and virtual reality. यूनिवर्सिटी सिस्टम में इस तरह के सब्जेक्ट्स अभी भी नहीं है, या बच्चों को पढ़ाए नहीं जाते हैं, या फिर आने वाले दिनों में क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, इस तरह का सब्जेक्ट का कोई ये नहीं है. ठीक है. नाउ वी विल सी दी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, principles and application. Abhijit Raut sir might have taken you the introductory part of the 3D printing technology. I will quickly go through the basically the what is 3D printing, and then finally take you to the applications and show you some case studies, 3 case studies, our own case studies, which is being carried out by us under the 3D printing. We have authored a book also on the 3D printing, additive manufacturing and 3D printing, and we are the first one. हाँ बोलिए. हाँ हाँ, आपण तुम्ही तिकडे का बरं बसले, इकडे बसा. अच्छा, पोरांना शांत ठेवायसाठी बसावं लागतं कधी कधी टीचरला, त्यांच्यामध्ये मला माहिती आहे. आय एम ऑल्सो टीचर. हां बसा टीचर. हां की आपण ते ऍक्च्युअल ऑर्गन्स जे आहेत आपले, हां त्याच्यानुसार काम करतील का नाही, हां आणि ते तर व्हर्च्युअल झालं ना. हो हो आणि रिअलिटी मध्ये आपण वेगळं आहे. हो हो प्रॅक्टिकली आपण तुम्हाला किती सांगितलं की तुम्ही कशा पद्धतीने करायची, हो ज्यावेळेस आपण त्याला पाण्यात टाकणार हो त्यावेळेस तो पोहायला लागेल. हो. तर या दोन गोष्टींमध्ये डिफरन्स आहे का एवढं मला नाही, दोन गोष्टीमध्ये डिफरन्स म्हणजे कसं आहे की व्हर्च्युअल रिअलिटी म्हटल्यानंतर, म्हणजे समजा एक एक्झाम्पल घेऊ. आता तुम्ही एखाद्या सिटीमध्ये फ्लॅट घ्यायला गेला, ठीक आहे. फ्लॅट घ्यायला गेल्यानंतर तो तुम्हाला पूर्ण फ्लॅटचं व्हर्च्युअल रिअलिटीमध्ये दाखवतो. ही बिल्डिंग मी अशी बनवणार आहोत. हार्ड कॉपीमध्ये नाही दाखवत. आजकाल त्याच्या ॲप आलेल्या आहेत, 3D आर्किटेक्ट ॲप, वेगवेगळ्या ॲप आलेल्या आहेत. तो ॲपमध्ये दाखवतो, ठीक आहे. टॉप व्ह्यू बिल्डिंगचा असा दिसेल, इथे टेरेस असेल, है ना. तुमचा फ्लॅट सर मधात आहे, तुम्हाला टेरेसवर जायला जवळ आहे अगदी. आपण लिफ्ट लावलेली आहे, लिफ्ट कशी ऑपरेट होत आहे तेही व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंटमध्ये दिसेल. आणि नंतर बाकीच्या इंटरनल गोष्टी ज्या आहे
सर तुम्ही इथे सोफा सेट ठेवू शकता, इथे किचन ठेवू शकता. तुम्ही लगेच म्हणाल की सर माझी वाईफ वास्तुशास्त्र फॉलो करते, तर मला वास्तुशास्त्राप्रमाणे जे आहे आग्नेय दिशा, ईशान्य दिशा या दिशेला पाहिजे. तर तो म्हणेल की आपल्याला इथे हा स्कोप आहे, या दिशेला करता येईल. तुमचं देवघर जे आहे ते किचनमध्ये ठेवू. तुम्ही म्हणाल देवघर आजकाल किचनमध्ये नाही ठेवत सर, हॉलमध्येच ठेवतात लोक, तर मला देवघर जे आहे ते हॉलमध्ये आणून दाखवा. तो व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंटमध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्रिएट करून दाखवेल आणि तुम्हाला दिसेल. ठीक आहे. तर आता तुमचा जो प्रश्न आहे की जे व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंटमध्ये दिसत आहे, पुढे त्याचं कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर ते अगदी तसंच दिसेल का, तसंच होईल का? तर दोन गोष्टीमध्ये फरक राहणार आहे. कारण काय की त्यांनी ज्या इफिशियन्सीनी तयार करून दाखवलं, फिनिशिंगनी तयार करून दाखवलं, ते सगळं व्हर्च्युअल रिएलिटीचं फिनिशिंग होतं. दिसताना ते चांगलंच दिसेल. ठीक आहे. आणि जे ॲक्च्युअल फिनिशिंग राहील, त्यांनी कुठले लेबर लावले, कुठले ऑपरेटर लावले, त्यामध्ये थोडासा फरक राहील. म्हणजेच बेसिकली काय, साडी जर विकत घ्यायची असेल तर ॲमेझॉनवरून जर साडी विकत घेतली आणि थोडाफार जर कलरचा डिफरन्स निघाला तर निघू शकते, कारण तुम्ही ती मोबाईलच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये बघितलेली साडी आहे. फॉल्टी डॅमेज साडी नाही राहणार, त्याची गॅरंटी आहे. पण तुम्ही जे काही व्हिज्युअलाइज केले कलर्स तुमच्या मोबाईल फोनवर, ते व्हर्च्युअली व्हिज्युअलाइज केले, तुम्ही ती साडी ऑर्डर केली, घरी आल्यानंतर थोडाफार डिफरन्स त्याच्यात राहील. त्याच्यामुळे आपल्याला सुद्धा व्हर्च्युअल रिॲलिटी वापरताना आपल्याला सुद्धा असं बिलीव्ह करावं लागेल की बा ॲक्च्युअल सारखं नाही राहणार. ठीक आहे. काहीतरी 90%, 10%, 19-20 का कुछ ना कुछ फरक रहेगा. आणि त्यांनी जर समजा चांगला मिस्त्री लावला, चांगला ऑपरेटर लावला, चांगले कार्पेंटर लावले जे फिनिश करणारे आहे, तर त्याच्यामध्ये ते त्याच्यापेक्षा जास्तही चांगलं दिसू शकतं. असं आहे. सो दिस विल बी द डिफरन्स इन व्हर्च्युअल रिॲलिटी अँड द रिअल इम्प्लिमेंटेशन. ठीक आहे. सो गुड क्वेश्चन. ओके. तर आता तुम्ही मागे जे बसलेले आहे ते सगळे शांत बसा. सर तुमच्यामध्ये येऊन बसलेले होते कारण तुम्ही गडबड करू शकता मागे बसून, म्हणूनच त्याकरताच सर येऊन बसलेले होते. आता सरांना मी समोर बोलवलेलं आहे, त्याच्यामुळे जे काही ऐकायचं ते व्यवस्थित शांतपणे ऐका. चहा घेऊन घ्या, ब्रेक. ठीक आहे. लगेच आपण 3D प्रिंटिंगचं ॲप्लिकेशन्स घेऊन घेऊ. ठेव. बिस्किट एकच दे, घेऊन जा त्यांना, एकच होतं. किलोमीटरच्या बाहेर पाहिजे. 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर. त्याचं आधार कार्ड घ्या लागतं. आधार कार्ड घ्या लागते त्याचं. हां, म्हणजे त्याच्या आधार कार्डवर जो ॲड्रेस आहे तो, म्हणजे समजा तुमचं आधार कार्ड लातूरचं असेल तर तुम्हाला भेटते, असा प्रकार आहे.
म्हणजे कॉलेजचं काही नाही का त्यांचं? कोणतंही असलं तरी, म्हणजे इंटरनल जरी असेल आपला, पण त्याचा आधार कार्ड 20 किलोमीटरच्या वरच्या ॲड्रेस. फार्मसीचा आहे तो. 6 किलोमीटर आहे. हां तो जर तिकडं चिखलीकडचा असेल हां चालतं तरी चालतं चालेल ना? चालतं चालतं. 3D printing technology, principles and the application. So what you learned about the 3D printing? 3D printing वर आपले 1-2 लेक्चर झालेले आहे. मी फक्त अप्लिकेशन पार्ट आणि केस स्टडीज दाखवणार आहोत. ठीक आहे. सो व्हॉट यू लर्न अबाउट द 3D प्रिंटिंग. 3D प्रिंटिंग आणि कन्व्हेन्शनल प्रिंटिंग किंवा कन्व्हेन्शनल मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये काय फरक आहे? एनीवन? हां, मटेरियल ॲड होतं. व्हेरी गुड. ठीक आहे. इट इज ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग. सो मटेरियल इज ॲडेड लेयर बाय लेयर. ओके, ठीक आहे. ओके, हां हां, येस येस, ठीक आहे ठीक आहे, बिलकुल, व्हेरी गुड. ठीक आहे. Basically, the FD and the that question of the conventional येस reduction is very much. येस But in 3D printing, we can add layers. येस So that reduction is very low येस or negligible. येस, व्हेरी गुड. लेअर बाय लेअर मॅन्युफॅक्चरिंग इज दॅट. सर तुम्हाला काही सांगायचं होतं? नाही, ठीक आहे. सो इफ यू कन्सिडर दिस पेन ॲज अ एक्झाम्पल, द पेन ॲज अ प्रोडक्ट. ओके, कन्व्हेन्शनली मॅन्युफॅक्चरिंग दिस पेन with the help of the either the lathe machine, either the you can say CNC machine or the milling machine. What we do that, अगर ये इसका डायमीटर अगर 10 mm का हमें चाहिए, तो in that case we will take a extra large diameter. Okay, maybe 15 mm diameter rod is taken, and then 15 mm diameter rod, it is being machined on a lathe machine in a conventional way to remove the material, and then we get a finished product as a 10 mm. ठीक है. So extra material which is to be removed, okay, it is basically wastage of the material. ठीक है. It is going to add to the cost of the product, है ना. कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना है. चाइना के प्रोडक्ट जो है वो दे आर वेरी चीपर कंपेयर्ड विद द इंडियन प्रोडक्ट. Japanese product, Korean products are also cheaper compared with the Indian product. The cost of production in India is high. The reason being is that हमारे यहाँ 5% 6% का रिजेक्शन रेट भी है. 5% 6% का रिजेक्शन रेट है. मतलब अगर हम 1000 गाड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें से 50 गाड़ियाँ स्क्रैप में चली जाती है. दे डू नॉट कॉज द क्वालिटी कंसर्न. या फिर हम 50,000 प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो हमारे 50 प्रोडक्ट वेस्टेज में जाते हैं. उसको रिवर्क करने की जरूरी है. ठीक है. जीरो एरर अगर रहेगा, जीरो इलिमिनेशन रहेगा, तो इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी. ऑल्सो देयर विल बी नो एडिशन. ये जो स्क्रैप प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है, इसकी कॉस्ट अल्टीमेटली कंपनी जो सेल हो रहा है, जो 95% अच्छे बना रहे हैं, उसके अंदर में ऐड हो चुकी है 5 कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट. तो इसलिए वो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेड कॉम्पिटिटिव विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ 3D प्रिंटिंग ऑपरेशन और द 3D प्रिंटिंग मशीनिंग प्रोसेस. सो क्विकली वी विल सी व्हाट इज द 3D प्रिंटिंग. Okay, additive manufacturing by ASTM, American Society for Testing and Material. Process of joining materials to make objects from 3D model data, usually layer upon layer, as opposed to the subtractive manufacturing methodologies such as traditional machining in case of the lathe machine. And therefore, the naming, the earlier name, it was basically rapid prototyping. This term was used in the beginning of the professional use of technology because the main application was the manufacturing of prototype, mock-ups and the sample part. So, and today's most common term is basically additive manufacturing and the 3D printing. So the first RP machine, rapid prototyping machine, was procured in the Vidarbha region, okay, in the Vishwesvaraya National Institute of Technology, wherein Dr. Puthe sir was the pioneer
in Vidarbha region to launch with the rapid prototyping machine, but because of some reason, Dr. Sir, Kute sir, I think, BC sir आले नहीं थे, हाँ नहीं आले. Dr. Kute sir could not make it convenient to visit your college for giving an expert lecture, but normally he goes to the various colleges, and he was the first person who has introduced the rapid prototyping machine and that kind of technology in the VNIT Nagpur. So this is the new name is for the this type of manufacturing process is nothing but the additive manufacturing or the 3D printing technology. Now you can see the simple 3D printed model. Okay, these model are hardly costing 50,000 to 60,000 rupees. I am an alumni of the Rajiv Gandhi College of Engineering, Technology and Research, Chandrapur. I did my BE from Rajiv Gandhi College, Chandrapur, and recently during NAC accreditation, I have donated this 3D printer to my alma mater, to my institute, which is costing 50,000 rupees. और मेरे जो 5 बुक्स है जिनकी कॉस्ट जो है वो 50,000 के आसपास है, ऐसे CRC प्रेस के 5 मेरे ही बुक पब्लिश किए गए जो कि ऑथर्स कॉपी आती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज मैंने वहाँ पे दी है. करीबन 1 लाख रुपए का मैंने डोनेशन मेरे कॉलेज को एज ए अलुमनी दिया है, राजीव गांधी कॉलेज को, और इस तरह की मशीन वहाँ पे अवेलेबल है. आपके कॉलेज में 3D प्रिंटर है नहीं है आई डोंट नो, ओके, बट इन फ्यूचर है तो अच्छी बात है, ठीक है. बट इन फ्यूचर द 3D प्रिंटिंग, ओके, हमारे देश ने टॉप 10 थ्रस्ट टेक्नोलॉजीज निकाले हैं. टॉप 10 थ्रस्ट टेक्नोलॉजीज मतलब क्या है, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट्स का, बीटेक के स्टूडेंट का या डिप्लोमा के स्टूडेंट का, इट शुड फॉल अंडर दैट थ्रस्ट टेक्नोलॉजी. तो जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द थ्रस्ट टेक्नोलॉजीज विच इज आइडेंटिफाइड बाय द इंडिया. हमारे देश में जो काम चल रहा है ये 10 टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है. जो प्रोजेक्ट हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए आते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट को फंड देना, कौन से प्रोजेक्ट को फंड नहीं देना, ग्रांट करना, अगर वो देश के 10 टेक्नोलॉजी के अंदर में अगर फॉल होते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग द फंड्स आर मोर. इफ दे डू नॉट फॉल अंडर द विजन ऑफ द कंट्री, naturally that kind of proposals will be rejected. So whenever you are preparing any kind of proposal, you have to see that it is falling under the vision of the country, it is falling under the technological development of the country which is being going on. So the additive manufacturing 3D printing technology is a part of the thrust technology identified by the India, and in another 10 years 20 years many more manufacturing will be done by this kind of 3D printers in the industry. And this is the one kind of 3D printer wherein you can see that कि ये कलर बॉल दिख रही है आपको. अब ये कलर बॉल बनाने के लिए जो है ऊपर एक प्रिंटर का हेड है, हेड दिख रहा है आपको, ओके. वो हेड में से जो है वहां पे एक नोजल लगाया गया है, ओके. सो दिस इज द प्रिंटर बेड, ओके. टॉप फ्लोर, टॉप पोर्शन इज नथिंग बट द प्रिंटर हेड. प्रिंटर हेड कैन मूव अपॉन which consist of the nozzle itself, okay. हीटिंग एलिमेंट है वहां पे, हीट किया जाता है तो सप्लाइड मटेरियल इज पीएलए मटेरियल है या अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स जो है वो यूज किए जाते हैं. एट प्रेजेंट अराउंड हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल्स आर बीइंग इन्वेंटेड विच कैन बी यूज फॉर द 3D प्रिंटिंग. कन्वेंशनली अगर देखा गया तो हमारे इसमें एग्जिस्टेंस में थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल है, फेरस, नॉन फेरस, पॉलीमर से लेके अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स है, लेकिन सारे के सारे मटेरियल्स अभी तक के 3D प्रिंटिंग में एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं. आउट ऑफ दैट अराउंड हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर. अंबादे सर ने या राउत सर ने आपको बताया होगा कि कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं. सो दिस मटेरियल इज बीइंग फेड थ्रू दिस नोजल वेयर इट इज बीइंग हीटेड, and then the layer by layer from the bottom side there will be a deposition of the layer by layer and the product is manufactured. So this is what the additive manufacturing is there, 3D printing is there, layer by layer manufacturing is there. Another printer is shown जिसमें आपको दिख रहा है कि 3D का जो पिक्चर है या 3D का जो एक कंपोनेंट है 3D लिखा हुआ वो बना रहे हैं. So additive manufacturing concerns as well as some of other technologies, powder injection molding, comprising metal injection molding, ceramic injection molding.
ये भी आपका कवर हो चुका होगा। एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आपका लेजर टेक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कवर हो चुका होगा। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द 3D प्रिंटिंग. It is not one of the oldest technology like a lathe machine, like a milling machines or manufacturing processes, but it is one of the recent one which was invented around 1980. And in 1983, the Charles Searles, he has invented the stereolithography, which is basically called as the SLA. So what Vishwajit Ambade has done the PhD, we have explored the two different material, combination of two different material under his research work. दो अलग मटेरियल लेके कॉम्बिनेशन करके हमने यूज किया। सारी मशीन जो है वो यूज की गई है टाटा टेक्नोलॉजी C8IIT सेंटर, which is worth rupees 230 crore. Ratanji Tata has invested in the Government College of Engineering, Chandrapur. All facilities are explored from that region. And then finally we have come up with the optimization of the parameter wherein the machine efficiency can be increased for that. So this is what the history of the 3D printing is there, and there are many more researchers those who are working in that area. So currently हम बोल सकते हैं कि अलग अलग लोग यहाँ इस सेक्टर में अपना रिसर्च कर रहे हैं, कंपनियां कर रही हैं, या फिर जो है रिसर्चर भी जो है अपना पीएचडी का वर्क कर रहे हैं या कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी वाइज डेवलप कर रहे हैं। एंड दिस एरिया ऑफ 3D प्रिंटिंग इट इज गेटिंग डेवलप। ओके, व्हेन इट वाज इन्वेंटेड इन 1983, शुरू में जो है वो पेटेंटिंग का भी इशू था, पेटेंटिंग के प्रॉब्लम थे कि किसको पेटेंट दिया जाए, किसको पेटेंट नहीं दिया जाए। ओके, बाद में ये इश्यूज जो है धीरे धीरे सॉल्व होते गए। This is AM value change. 5 parts are there: material, system, software, application design and production. And these are the players. Okay. EOS, SLM solutions. In software, materialize, netfab. So basic thing is that if you want to manufacture this product with the 3D printing, then you need to create a solid model. How to create a solid model? Either work with the CATIA software, either work with the Pro E software, either work with the solid edge modeling, whichever the software which you want to use, whichever software which you want, which you know, for that software create a solid model. Once the solid model is created, you have to do the slicing in the sense layer by layer करने के लिए स्लाइसिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो स्लाइसिंग के सॉफ्टवेयर से स्लाइसिंग करना है। स्लाइसिंग करने के बाद में मशीन में सारा का सारा प्रोग्राम आपका इंपोर्ट करना है, और मशीन में इंपोर्ट करने के बाद में मशीन विल ऑपरेट एज पर द प्रोग्राम विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड with the help of the slicing software and with the help of you people those who are correcting the programming of for that machine. तो ये सारा जो प्रोसेस करते हुए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी जो आते हैं, मटेरियलाइज, नेटफैब, application design, concept laser, and in the production laser wise 3T PRD. These are all the players in the 5 basic components of the additive manufacturing. So we are happy and privileged to inform you that we are the first Indian author. These names are all from the foreign companies. Okay, those who are manufacturing this kind of machines, those who are into this basically additive manufacturing, okay, and the 3D printing area. So we are the first Indian author to write a book for CRC Press, Taylor and Francis Group in the area of the additive manufacturing and 3D printing. No more Indian author is there as on today also. Okay, तो हमारी जर्नी भी स्टार्ट कहाँ से हुई थी बुक लिखने की? तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है, आपको पता ही है। ओके, कौन सा फेमस प्रोडक्ट बनाता है टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप का? क्या नाम है? यस, वेरी गुड, बेनेट एंड कोलमन। इंडियन ग्रुप है? नहीं है, फॉरेन ग्रुप है। बेनेट एंड कोलमन इज द ग्रुप ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। बेनेट एंड कोलमन ग्रुप का एक प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है इंडिया में। कौन सा प्रोडक्ट है? कोलगेट टूथपेस्ट, है ना, उन्हीं के इसमें बिलोंग करता था वो।
तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन किसका है, कंपनी का है, ये नहीं जानते। ठीक है, तो इसलिए बेनेट एंड कोलमन की एक यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, बेनेट एंड कोलमन यूनिवर्सिटी करके, बेनेट यूनिवर्सिटी करके, और वहाँ पे जो वाइस चांसलर थे वो प्रोफेसर जो है वो आईआईटी से रिटायर्ड होके पुणे से है, अपने पुणे से वहाँ गए थे, महाराष्ट्रियन वाइस चांसलर थे, और उनके यूनिवर्सिटी में पहली बार सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया एडिटिव प्रिंटिंग और 3D प्रिंटिंग का। तो हमारे जो को ऑथर है वो डॉक्टर डीपी कोठारी, हु इज आल्सो एक्स डायरेक्टर ऑफ द आईआईटी दिल्ली, जो कि अपने एरिया के विदर्भ के हिंगनघाट के हैं, आईआईटी दिल्ली में डायरेक्टर रह चुके हैं। तो उनको बेनेट एंड कोलमन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का फोन आया कि भाई हमें ऐसा ऐसा बुक चाहिए, हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, कोई बुक नहीं है या फिर इंडियन ऑथर नहीं है, क्या आप इतने सारे कोठारी सर को बोला कि आपने बुक लिखे हैं, तो जो आप कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज करते हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो नागराज कोठारी का बुक यूज करते हो, वही ऑथर की बात बता रहा हूं मैं आपको, कोठारी सर की। तो उन्होंने बताया कि आप बुक लिखिए। देन आवर जर्नी वॉज स्टार्टेड एंड फाइनली वी हैव रिटन अ बुक नॉट ओनली फॉर द बेनेट एंड कोलमन यूनिवर्सिटी। हमने ये सोचा है इंडियन पब्लिशर के साथ क्यों लिखे करके, directly we approached CRC Press, Taylor and Francis Group. They have accepted our manuscript. It has to go through the rigorous selection process. They have accepted our manuscript, and finally our book was published in the 3D printing and additive manufacturing. It is well accepted by the US professor and the UK professor, US universities and the UK universities. Recently हमारे जो editor है, she is also a professor from America. She has contacted us and she has given us कि आपका बुक बहुत अच्छा यूएस और यूके में परफॉर्म कर रहा है, आप बुक को रिवाइज करिए, आपको समय नहीं होगा तो वी विल प्रोवाइड यू 3 year स्पैन ऑफ टाइम टू राइट अ बुक फॉर अ रिवाइज एडिशन, लेकिन आप करिए, हम लोग आपका नेक्स्ट एडिशन बुक का जो है वो पब्लिश करेंगे। So then our journey was started with the additive manufacturing 3D printing for writing a book, and we became a first Indian author to write a book in this particular area. So all these people, this looks like a foreign player. So you as a budding engineer, those who are sitting here on the back bench, but I hope that they will come up and do something in the area of the 3D printing and additive manufacturing and contribute something, some technology for the country, India, or for our country, and it will be developed. This is development of 3D printing technology hype cycle. If you come to the AM applications, they have been developed in the various industries like consumer production industry, electronics industry, automotive sector, medical sector, aerospace engineering, molds, tool and molds, and other investment which is being shown here. So almost all type of industries are using the additive manufacturing and the 3D printing. So these are the advantages of the 3D printing: design complexity and freedom, speed, customization, toolless manufacturing. There is no cutting tool which is required in the 3D printing. Extremely lightweight design, sustainable, environmentally friendly, no storage cost, increase employment opportunities. Any technology, it comes with certain kind of drawbacks. You people, you as a budding researcher, budding engineer, has to work in that particular area to remove the drawbacks. So therefore I am giving you the drawback: that questionable accuracy, support material removal, limitations of raw material. Currently only hundreds of materials are being tried and explored for the 3D printing. ज़्यादा मटेरियल अपने एग्जिस्टेंस में है नेचर में, लेकिन वो सभी मटेरियल के लिए एक्सप्लोर करेंगे. कंसिडर लिमिटेशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंसिडरेबल एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन डिजाइन फॉर सेटिंग द प्रोसेस पैरामीटर, material cost, material properties, and intellectual property right. These are all the issues, drawbacks can be there with the 3D printing applications, 3D printing machining process. Limitations of size, cost printer, unchecked production of the dangerous atom. आपके पास में अगर अपना खुद का 3D प्रिंटर है तो गन लेने के लिए बाहर से लाइसेंस लेके गन खरीदी जाती है.
3D प्रिंटर अगर है तो आप 3D प्रिंटिंग से अपनी खुद की गन बना सकते हैं, ठीक है, और उसको यूज भी कर सकते हैं। इसलिए ठीक है, द डेंजरस एटम्स लाइक अनचेक प्रोडक्शन कैन बी देयर एंड करंटली द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर okay is also somewhat high. Now this is the India's first 3D printed house about IIT Madras startup Tivasta Home in Chennai. ठीक है, घर बनाने के लिए पहले समय लगता था, है ना। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी आती है, अंबुजा सीमेंट की आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, तो उसमें ये अंबुजा है कि शायद अल्ट्राटेक सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट मतलब वो काला वाला हाथी दिखाता है, ऐसा घर के ऊपर चढ़ता है, या फिर खली दिखाता है जो दीवार को ब्रेक करता नहीं कर पाता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है कि घर आदमी का एक ही बार बनता है लाइफ में, ठीक है। तो वो बेटे को बोलता है कि भाई कौन सा कैसे बनाया घर यहाँ पे, तो वो बोलता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट यूज किया। तो पापा आपने ही तो बताया था कि एक ही बार घर बनता है करके, तो मैंने सबसे अच्छा सीमेंट जो है वो यूज किया। तो घर बनाने के लिए कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का समय लगता है, ठीक है, और समय को कम भी नहीं कर पाते। क्यूरिंग है, स्लैब है, पिलर्स है, डिगिंग द होल्स है ना, बीम्स लगाना है, सारी चीजें करना है। लेकिन इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस, इट इज कंस्ट्रक्टेड विद इन 1 मंथ स्पैन ऑफ टाइम। 1 महीने में आपका घर बन जाता है। ऑफलाइन लेन में आप बना देते हैं, अलग ऑफ ट्रैक में, है ना, और यहाँ आके सिर्फ इंस्टॉलेशन होता है और आपका 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो बन जाता है, ठीक है। आजकल मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन चलता है वो भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट है ना। इतना फास्ट कैसे बनाएंगे मेट्रो? आज नागपुर में मेट्रो कार्यान्वित मतलब ऑपरेशन में है, ठीक है। लास्ट 3 साल में मेट्रो ऑपरेशन में है। अभी नेक्स्ट फेज जो है 2 साल में ही नेक्स्ट फेज, मतलब बुटीबोरी से छत्रपति स्क्वायर से बुटीबोरी वहां तक के डिस्टेंस कवर हो रहा है। उधर कोराडी कळमेश्वर तक मेट्रो जा रही है। इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, लेटेस्ट टेक्निक यूज कर रहे हैं, इसीलिए पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए these are the 3D printed house which can be prepared, okay, in quick time, and this is one of the startup from the IIT Chennai. So this we will not touch now, product life cycle. We will directly go to the case studies. ये सब अपना कवर किया होगा कि भाई 3D प्रिंटिंग के कौन से मेथड्स है, लिक्विड बेस, पाउडर बेस, सॉलिड बेस, SLA, DLP, ये सब आपका कवर हो चुका होगा। एप्लीकेशंस, व्हेन यू कम टू द एप्लीकेशंस, 3D printing has a benefit in the aerospace and defense, low volume production, weight reduction, material efficiency, consolidation of the part, and maintenance and repair. So many of the aeroplane parts are prepared with the help of the 3D printing, which are light in weight, okay, and customized as per the requirement of the aeroplane agency. Then automotive industry, this is a particularly engine part, engine block, which is being prepared with the help of the 3D printing machine. So faster product development, greater design flexibility, customization, and create complex geometry. So automotive industry, in most of the vehicle, the internal part of the vehicle, जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, जो कि डेकोरेटिव होता है ना, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, PLA मटेरियल का होता है, वो सारा पार्ट जो है वो 3D प्रिंटिंग मशीन से ही बनाते हैं। या एक्सटीरियर सम ऑफ द पार्ट्स आर आल्सो बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द 3D प्रिंटिंग। इन ज्वेलरी इंडस्ट्री, okay, the use of the 3D printing is that direct printing process, okay. Gold, it is very easy to melt, okay, so therefore again it is very customized or the favorable material as far as jewelry industry is being considered, okay. And whatever you imagine, you create a 3D object for that and get it manufactured with the help of the 3D printing. So in the jewelry industry, in the tableware industry also, this type of ceramic tableware
the 3D printing bowl set, salt and pepper shaker, which looks good, which performs well. In the tableware industry also, household applications also, this kind of 3D printing machines are being used in the industry. Arts and architecture, these are the 3D printed architect design to create a part, to create a models of the building which is to be constructed. अभी जैसे है, आप अगर किसी मतलब गोदरेज सिटी में जाओगे या बहुत सारी नागपुर में जो है एंसारा है, गोदरेज है, मतलब मुंबई में जैसा डेवलपमेंट हो रहा है वैसे ही नागपुर में हो रहा है, तो आपको वो मॉडल दिखाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर मॉडल है. अब वो मॉडल का एक एक पार्ट थोड़ी बनाते बैठेंगे, उन्होंने जो सॉलिड मॉडल बनाया था 3D प्रिंटिंग आर्किटेक्ट में तैयार किया था, उसका 3D प्रिंटिंग मशीन पे मॉडल तैयार किया है और वो डेकोरेटिव करके लगाया गया है. यहाँ से रोड रहेगा, यहाँ मतलब जो क्लब रहेगा, यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेगा, यहाँ आपका फ्लैट रहेगा, यहाँ आपका स्विमिंग पूल रहेगा, यहाँ आपकी एम्यूनिटीज रहेंगी. सो एवरीथिंग दे आर शोन. So in case of the architect industry also, this kind of 3D printing machines are used. In case of the construction industry also, we started using the 3D printing because we have seen that the first India's first house as a startup of the IIT Chennai, which was constructed in the quickest possible time. So this kind of in construction industry also, many more components are being printed with the help of the 3D printing. Fashion and textile. In fashion and textile also, for creating a garments, we use the 3D printing machines. Whatever you imagine, आप जो जिस तरह का इमेजिन करेंगे ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, उसी तरह का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, सॉलिड मॉडल तैयार कीजिए और उसका मैन्युफैक्चरिंग कीजिए. So there is no limitation. Then weapons also, in 2012, Defense Distributed US-based group announced a plans to design a working plastic gun that could be downloaded, reproduced by anyone with a 3D printer instead of transferring the weapon to some other location. सियाचिन में जहाँ पे वेपन्स लेके जाना और ये करना डिफिकल्ट है, वहाँ पे 3D प्रिंटर ही वहाँ पे दे दिए हैं, इधर से जो है वो ट्रांसफर कर दिया डेटा, उधर मैन्युफैक्चरिंग का दे दिया और वहीं पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके वेपन्स को डिफेंस सेक्टर में यूज करेंगे. ओके, वेयर आवर वेपन्स कैन नॉट रीच टू दैट प्लेस. सो दिस वाज ट्राइड इन 2012 in the US based defense industry. So these are the 3D printed weapons which works like actual weapons, and the 3D printing machines are being used in this industry. These are the musical instruments, 3D printed guitar which is readily available in the market, and parts are being produced with the help of the 3D printing. This is the food product. Okay. अब ये आर्टिफिशियल फूड नहीं है, नहीं तो बीच में सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया था, है ना, आपने सुना भी होगा कि चाइना जो है वो आर्टिफिशियल राइस बना रहा है जो कि वाइट दिखता है, प्लास्टिक का है, लेकिन अगर आप खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट इट लुक्स लाइक राइस और राइस में मिक्स करके उसको बेचते हैं. सो इट्स नॉट लाइक आर्टिफिशियल राइस, इट इज यूजिंग योर ओन फूड मटेरियल, शुगर पल्प या राइस का पल्प या किसी मटेरियल का पल्प लेके 3D प्रिंटिंग मशीन से दिस काइंड ऑफ डेकोरेटिव फूड आइटम्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द 3D प्रिंटिंग मशीन्स. देन मूवीज, 3D प्रिंटेड प्रॉप्स यूज्ड इन द मूवी, animated movie 3D they are gaining a lot of popularity nowadays, है ना. सोच रहे होंगे सलमान खान जी, शाहरुख खान जी और सारे लोग कि भाई एक अभी एनिमेटेड मूवी आई थी नरसिम्हा, किसने देखी है? अभी देखी है किसी ने? देखिए विशेष सर ने देखी है, मेरे बेटे ने भी जाके देखी है, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन बेटे ने बताया था कि पापा ये मूवी जो है 2 या 3 करोड़ में बनी है और 100-125 करोड़ का बिजनेस कर गई. तो जो एक्टर लोग हैं वो भी सोचने लगे कि भाई ऐसा अगर एनिमेटेड मूवी बनेगी तो हमारा कैसा चलेगा. ठीक है. सो बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ 3D प्रिंटेड प्रॉप्स, okay, these are used in the film industry, and film industry will have many more applications of 3D printing machines. In the electronics industry, RFID, okay, short lead time for electronics good, 3-dimensional
micromechanical systems, microwave circuit built on paper substrate. So 3D printing is also used for manufacturing of the electronics part. Tool and mold making, universal device holder, die casting forms, injection molding devices. Here also 3D printing is application is there. In medical field, design and modeling of customized implants and medical devices, process for the manufacture of smart scaffold, construction of 3D biological and tissue model. Okay, आर्टिफिशियल नी लगाया जाता है, नी का ऑपरेशन होता है आजकल, आर्टिफिशियल नी को रिप्लेस किया जाता है, आर्टिफिशियल नी जो बनता है वो भी 3D प्रिंटिंग मशीन से ही बनता है. या डॉक्टर्स जो पार्ट बनाते हैं, आर्टिफिशियल पार्ट विच इज रिप्लेस इन द मतलब प्रोस्थेटिक हैंड बनाया जाता है, या जयपुर लेग या जयपुर फुट आपने सुना होगा, तो वो सब 3D प्रिंटिंग मशीन से आजकल बनने लगे हैं, विच आर अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. So these are our case studies. Now we will see the case studies and then we will end with our lecture. This is the first case study which is provided in our book. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग का जो बुक लिखा है उसमें ये केस स्टडी है. इसमें प्रोस्थेटिक हैंड, ये जो प्रोस्थेटिक हैंड दिख रहा है, इट्स पार्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द 3D प्रिंटिंग. ये 3D प्रिंटेड पार्ट है. इट इज एग्जीक्यूटेड इन दी तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. दैट टाइम आई वाज अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. Okay, then I left the college in 2018. So that time we have prepared this part with the help of the 3D printing machine which was available with us. Now also they have a very good 3D printing facility. और ये जो रिसर्चर दिख रहा है, हैंडसम पर्सनैलिटी, वो रिसर्चर है जो कि वर्क कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग के इसमें. तो आप अगर एक रिस्ट देखा जाए तो इसमें बहुत सारी मतलब जो है अलग अलग मोशंस है. अलग अलग मोशंस मतलब ये रिस्ट तो यहाँ से आता ही है, बेंड होता ही है, उसके साथ साथ हर एक उंगली को अलग अलग मोशंस है. ये उंगली को अलग मोशंस है, ये इसको अलग है, इसको अलग है, पांचों फिंगर को अलग अलग है. अब पांचों फिंगर में अलग अलग है तो वहां पे भी जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जॉइंट है, तो ये ऊपर का पोर्शन बेंड हो सकता है, यहाँ का पोर्शन बेंड हो सकता है और यहाँ भी बेंड हो सकता है. तो जॉइंट्स आर देयर. सो व्हेन यू वांट टू ग्रैब्स द ऑब्जेक्ट, अगर ये यहाँ पे पड़ा है, इसको ग्रैब्स करना है, मतलब कैसे है, यहाँ पे जाके आपकी रिस्ट लेके जाना पड़ेगा, पांचों उंगलियां एक साथ चलना चाहिए इन अ सिंक्रोनाइज वे. ओके, इट शुड ऐड सम प्रेशर, होल्ड ऑन करना है तो कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा. सो उसके लिए वो जॉइंट्स को मूवमेंट के लिए वी हैव प्रोवाइडेड द इंटरनल थ्रेड्स. आप देख रहे होंगे कि थ्रेड्स दिए हैं और वो थ्रेड्स को ऑपरेट करते हुए इट कैन इवन होल्ड a weight of the mobile phone. So we have executed the project as a part of the case study that this prosthetic hand, all parts were produced by the 3D printing machine. They are configured, internal threads were inserted so that it can be synchronized, and finally this particular 3D printed prosthetic hand was configured to the industrial robot. देखिए, ये रोबोट के ऊपर इसको लगा दिया है. मान लीजिए ये रोबोट के हाथ में एक पेन दी है ना, पेन से अब ये मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया जी के आवारी, ठीक है, अगर ये पेपर पे लिखा हुआ जी के आवारी रिप्रोड्यूस करना है रोबोट के सहायता से, तो ये रोबोट जो है ये स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग करके इमेज तैयार करके अपना प्रोग्रामिंग तैयार करेगा, और प्रोग्रामिंग तैयार करके ये प्रोस्थेटिक हैंड जो है इससे रिप्रोड्यूस करेगा अलग पेपर के ऊपर जी के आवारी करके. सो दिस काइंड ऑफ केस स्टडी वी हैव डन एट TGPCT and it is incorporated in our book on 3D printing. This is the another case study. Okay, the person which you are able to see who is a BTech pass out from IIT, and he is Sumit Gattewar, the CEO of the Pi Technologies Nagpur, and he owns a coaching class in Nagpur जिसका नाम है IIT होम करके, उसके वो खुद ही है. तो
ये जो सुमित गट्टेवार है और हमने जो डिवाइस तैयार किया गया है लेफ्ट हैंड साइड में विच यू आर एबल टू सी इज बेसिकली द रिस्ट वॉच. दिस इज बेसिकली रिस्ट वॉच. These are the internal parts of the wristwatch. You can see Sumit Gattewar working on preparing this part. This machine is nothing but the 3D printing machine. These parts are being produced with the help of the 3D printing machine. These parts are assembled and incorporated into the smartwatch. What is the purpose of the smartwatch then? अभी ये अगर स्मार्टवॉच पकड़े हम तो इस स्मार्टवॉच में मुझे अभी के अभी दिखाई दे रहा है कि अभी आपको बताता हूं. एक्टिविटी में मैं क्लिक करता हूं 102 कैलोरी. आज मॉर्निंग से मैंने 102 कैलोरीज बर्न की है. 1.64 किलोमीटर मैं चल चुका हूं. मेरे हार्ट बीट्स कितने हैं, क्या है, ये सभी वहां पे पता चल रहा है. टाइम टू ड्रिंक मतलब पानी कब पीना चाहिए ये भी वहां पे पता चल रहा है. So what was the need which was observed by us? हमें जो है वो ऐसे नीड क्यों लगी इस तरह की रिस्वॉच जो है 3D प्रिंटिंग से बनाने की, ये बताता हूं कि जब सेकंड फेज में कोरोना हुआ था, है ना, फर्स्ट फेज में कोरोना हुआ था. फर्स्ट फेज में जो डेथ्स हो गई थी वो मोस्टली ओल्ड एज पर्सन की थी. आपको भी पता है इंडिया में जब सेकंड फेज में कोरोना आ गया था तो बहुत सारे यंग पीपल की डेथ होने लगी थी. तब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिसाइड किया था कि सारे हॉस्पिटल का ऑक्सीजन ऑडिट किया जाए. ऑक्सीजन ऑडिट जो है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो सभी गवर्नमेंट की मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, ऐसा तो नहीं है. ओके, वो अगर वाक साहब की ऑर्डर अगर देखेंगे डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन की तो प्राइवेट में भी उसने कोऑपरेट किया है. तो सारे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, प्रोफेसर्स है, उनको ये महाराष्ट्र के काम दिया गया था पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के कि आपको हॉस्पिटल्स का ऑक्सीजन ऑडिट करना है. अब हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन ऑडिट करेंगे तो नेचुरली ऑक्सीजन ऑडिट कहाँ होता था, कोरोना के हॉस्पिटल में ही होता था. तो कोरोना के हॉस्पिटल में जाना पड़ता था एज ए कोरोना वॉरियर. हम लोग भी गए, शायद आपके भी स्टाफ जो है उसमें शामिल हुए होंगे. ठीक है, नागपुर सिटी के तो सभी प्राइवेट कॉलेजेस के थे इंक्लूडिंग रामदेव बाबा, वाईसीसी सभी. तो वो एक हुआ. दूसरा जो है कोरोना काल में जो है वो इतने सारे एम्बुलेंस, इतने सारे हर्ष वैन मतलब स्वर्गरथ खरीदे गए कि लाशों को लेके जाने के लिए ट्रक में लाद के कोई आने के लिए तैयार नहीं था. कैसे तो भी ट्रकों में लाद के लेके जाते थे. So therefore government has decided to procure the ambulance, to procure the basically hearse van. तो उसको बहुत सारे प्रमाण में खरीदा गया था. जब भी कोई एनएमसी खरीदती है नया व्हीकल तो उसका ऑडिट करना हमारा काम होता है क्योंकि हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और ऑटोमोबाइल में ये काम होते हैं. तो जो हर्ष वैन, स्वर्गरथ, जो एम्बुलेंस यूज किए गए थे, है ना, फेज 2 में, ऐसे हर्ष वैन का हमको ऑडिट करना पड़ा था और हमने किया था. ना थोड़ी बोल सकते गवर्नमेंट को कि हमको भी कोरोना हो जाएगा करके. और हमको कोरोना बहुत सारे लोगों को हो गया था. मुझे भी हो गया था फेज 2 में, मेरे कलीग को भी हो गया था. एंड आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर 12 days, आईसीयू में था. ठीक है, अब आजू बाजू के लोग अगर देखता था मैं तो आजू बाजू के लोगों की समस्या देखने की कोशिश की. अब एक एग्जाम्पल अगर बताया गया तो एक बीएसएनएल के इंजीनियर मेरे बाजू वाले बेड पे थे. है कि नहीं है आई डोंट नो, कहाँ से थे मालूम नहीं, एमपी से थे. लेकिन उनके दोनों बेटे जो है वो एक कलेक्टर था और एक आईएएस था इंडियन रेलवेज में. लेकिन उनका दुख ये था कि कोई मेरे पास आज नहीं है कोरोना में. ठीक है, ये एक हो गया. दूसरे बाजू वाले बेड के ऊपर उसकी डेथ हो गई. लेकिन वो एमपी का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सीए था और उसका ब्रदर इन लॉ उसकी सेवा करते हुए पूरे 10 दिन 15 दिन उसके साथ था. मैं सोचता भी था कि ब्रदर इन लॉ कैसे उसको टच करके कर रहा है करके, अपने साथ तो कोई नहीं है. ठीक है, तो लेकिन वो सीए की डेथ हो गई. वो थोड़ा डरते थे कि भाई क्या हो गया करके. सामने वाली बेड के ऊपर एक ओल्ड एज लेडी थी. ओल्ड एज लेडी मतलब 45-50 की होंगी. उसका बेटा रोज मिलने आता था
3 दिन के बाद में बेटा मिलने नहीं आया। उसका दुख ये था, वो माँ का, शायद वो है कि नहीं है आई डोंट नो, लेकिन मेरी ये जानकारी है कि वो चली गई करके कोरोना फेज 2 में। आजू बाजू वाले बेड वाले लोग जाते हैं तो अपना भी थोड़ा सा जो है मॉरल कम हो जाता है। तो उसका ये डर था कि रोज मेरा बेटा मिलने के लिए आता था आईसीयू में, लेकिन आज से कोई नहीं आया। तो शायद उसको लगने लगा कि मेरा अभी अंत समय आ गया है। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट दी आवर रिलेटिव सिटिंग एट होम, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट की हालत कैसी। ठीक है, अब मेरी वाइफ मुझे रोज फोन करती थी, कल आएंगी वो यहाँ पे लेक्चर देने, कि भाई आपकी तबीयत कैसी है। अब मुझे खुद को समझ में नहीं आता था कि तबीयत कैसी है, अब क्या बोलूँ, है ना। 4 लोग तो मुझे उठाने के लिए थे। ओके, शुक्रिया, थैंक्स टू द गॉड दैट माय स्टूडेंट्स वेयर देयर। 4 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 4 स्टूडेंट थे। वो मुझे ऐसा उठा के लेके जाते थे वॉशरूम के लिए, वो मुझे टच करते थे, मतलब पास में आते थे। उनको कोरोना नहीं हुआ। मैं सोचता था कि उनको क्यों नहीं कोरोना हुआ करके, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मेरी पूरी सेवा की, पूरे 12 दिन पूरी सेवा की। वॉशरूम को उठा के लेके जाते थे और लेके आते थे। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट the relatives, families, friends sitting at their place, they should understand what is the condition of the patient, corona patient. Second thing is that what is the doctor opinion. अब डॉक्टर हर एक के साथ बात कर सकता क्या? नहीं, डॉक्टर के पास भी इतना समय ही नहीं था कि भाई आपका पेशेंट कैसा है, क्या है। उसको तो पहचान में नहीं आता था कौन सा पेशेंट है और कौन सा क्या है ना। कुछ भी नाम बताए, किसका भी कुछ बता देते थे। तो by wearing this wristwatch, okay, the data which is recorded into the cloud, which is supported for that, through that cloud it will be supplied to the mobile phone, and on your mobile phone you will be able to see the entire health data of that person which is there in the ICU, which is there in the hospital. So these kind of device, okay, health monitoring wrist device, which was prepared by us and manufactured by the 3D printing machine, and it is available. This case study is available in our book. This is third case study. This case study was executed by Abhijit Raut, okay, who is our colleague, and this case study talks about in accidental cases how to carry out the surgery for the doctors. So this was done by the Dr. Sai Deshpande, dentist from the Nagpur in the Lata Mangeshkar Medical College. And this particularly upper part which you can see, it was used for performing the mock surgery. These are the certain implants which has been shown that artificial knee is being prepared, and in medical application there are a lot of applications of the 3D printing. So foot, prosthetic hand, or artificial heart can be prepared with the help of the biocells taken from the human body. और बायोसेल लेके जो है मेडिकल एप्लीकेशंस में काफी सारे पार्ट, इवन किडनी कैन आल्सो बी prepared with the help of the 3D printing machine. So these are all the case studies of the 3D printing. So today I was supposed to talk about AR, VR and the 3D printing applications. So I brought 3 case studies for you people, which was incorporated in the book. And these are the additive manufacturing versus conventional manufacturing. Some strengths are there: elimination of design limitation, dimensional accuracy, no expensive tooling criteria and all. And there are certain drawbacks also we have studied compared with the conventional manufacturing process. Okay, this is the another case study of AR VR lab which is being established at the GH Raisoni College of Engineering, Nagpur. Few photographs of their laboratory, not available with us in Government Polytechnic, but few photographs of the AR VR laboratory I am showing you as a part of the Center of Excellence they have developed. Okay, which is under the Computer Science and Engineering and Electronics and Telecommunication Engineering. Okay, learning outcomes that you gain through understanding of the principles and technologies underlying augmented reality.
develop proficiency in using AR, VR development tools, software and hardware, what they are teaching into their curriculum, autonomous curriculum, it's autonomous institution. Acquire advanced programming skills for creating AR, VR application, enhance critical thinking, creative thinking and problem solving, develop an innovation mindset, encouraging experimentation, iterative improvement in AR, VR project. So these are learning outcomes which they have formulated for a particular laboratory, wherein students are trained, wherein students are doing a programming in the AR, VR lab, studying a new subject and acquiring a new skill in their Institute of G.H. Raisoni College of Engineering. This is the virtual reality applications. Engineering student can interact with 3D models of machinery and system, enhancing their understanding of complex concept and processes. VR creates immersive shopping experiences. Virtual plant tours explore complex machinery and processes through immersive VR experiences. So these are the complex machinery can be visualized, can be seen without actually visiting the plant, and it can be visualized. That kind of things are being created by their institute. Okay. Safe and accessible learning, experience industrial environment without physical risk of travel, interactive science experiment, perform virtual experiment in various scientific fields. So these are all the experiments which are available in the G.H. Raisoni College of Engineering. They have developed their own curriculum under autonomous institution to have this kind of content like a Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, visual perception, rendering, the geometry of virtual world, represented in the virtual world, introduction to the virtual reality. Okay. Training modules, AR, VR training modules for the students are being developed, module 1, module 2, module 3 like that, module 5, 6, 7. Okay. They have their hardware as well as software available with them, like a hardware specification, processor, graphics, RAM, motherboard, storage, Unity teaching license, instructor-led teaching, VR headset, AR, VR lab complete package is there available with them, which is offered to the students. These are the glimpses of the Raisoni's laboratory, G.H. Raisoni College of Engineering and Management, Nagpur, which is in Hingna MIDC. Okay. So with this, I end my lecture that we have studied the AR, VR, its application, and also the case study of the AR, VR, the lab which is developed. If you are preparing the proposals for funding for any kind of agencies, you have to see that it should be of high quality, fall into the vision of the country, where you want to take your student or wherever you want to develop the country. These are the books, my authored books, like additive manufacturing and 3D printing technology. Okay, its cost changes. It is available in the dollars and it is available on Amazon. Normal stores में ये उपलब्ध नहीं है या नहीं रहते हैं. Ethics in Information Technology, which is written for the Computer Science and Engineering Information Technology student. Automotive System, Principles and Practices, Strength of Material, Hydraulic Machinery. These are written for the New Age International Publisher. The same publisher, CBSE के जो बुक्स है, आर डी शर्मा का बुक जो यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में सीबीएसई के, वही पब्लिशर पे न्यू एज इंटरनेशनल पे हमारा बुक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक मशीनरी. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको हम इंजीनियरिंग टर्म में ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक बोलते हैं. ठीक है. कंप्यूटर ग्राफिक्स है, मैथमेटिक्स है. So these are all the books which is authored by me. Around 11 books are authored by me. Okay, and this is what finally I end with my lecture, that we owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. This is said by the Albert Einstein. This is the quote of the Albert Einstein. So for AR, VR or for the additive manufacturing, this is just a beginning. This is not the end. Again, 1 decade, 2 decade, maybe 10 years, 20 years, we have to work in that field to explore the entire additive manufacturing and 3D printing field, like a conventional machining,
जिस तरह से ओल्डन डिकेड से लेके अभी तक के यूज़ किया जा रहा है, उसी तरह से हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन कंट्रीब्यूट टू द 3D printing applications or 3D printing area. So thank you very much. Thanks a lot. If any questions are there. So if you have any questions, let me take the questions. Otherwise, tomorrow also, morning I am available. Okay. Okay. We can have the questions at that time. Okay. Thank you very much. Thanks a lot.